Welcome back to our channel. My name is Sumit And my name is Anjali. and you're watching our channel Kerala Wale Sharmas. So guys, please watch this video till the end so that you will not miss any important information here. और साथ ही में प्लीज गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए. इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. और साथ ही में हम रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं जिससे आपको सारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है 2021 की या पिछले साल की सारी न्यूज़ आपको मिलती रहे कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स आए हैं A to Z रिगार्डिंग कैनेडियन इमिग्रेशन. सो इसलिए प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon so you don't miss any important information that is really important. It is the first draw of year 2021 and we are going to tell you about the 171 draw which has come today and we will give you few data about it. So last 5 CRS cutoff for ITA which have been like on 23rd December was the second last which was a 178 draw. Before that it was on 9th December, 25th December and 18th November. So those were the CRS scores which I have shown you. But this draw was a little bit surprising as well as shocking because everybody was expecting that it's going to cover all the programs. But this draw was a bit different. It was 171 draw and the CRS score was quite high, 813. But there was one change that it was not covering all the programs. It was only covering provincial nominee class programs under express entry specifically for this draw and it was declared on 6th Jan. If we go through few other statistics for the first CRS draw, so I will give you that to you now. So let's go for that. 171 draw, 250 ITAs were issued, 813 was the CRS cutoff to have the tie-breaking rule and it was only for the provincial nomination programs, PNP programs. So I have taken the screenshot directly from the Canadian government website. So they have given the statistics as per January 4, 2021. So I just give you a few stats about it. Only 183 people were there in the CRS score range from 601 to 1200. And then we had few more from 501 to 600, that was 273. Overall only 250 ITAs have been issued. So there are still many people under 501 to 600, that amounts to 273. 451 to 500, on total there are 24,466 people and from 401 to 450 there are 45,538 people. So if we talk about the prediction, we can remove this line of 401 to 450 completely because already हमारे ड्रॉ में बहुत सारे लोग हैं जो कि अराउंड 451 to 500 में 24,466 हैं. 491 to 500 में itself is 231, 481 to 490, 486, 471 to 480 it is around 1134. अगर हम इन सब चीज़ों को देखें और 10,000 के करीब है 461 टू 470 में, अगर हम इस पूरे स्टैट्स को देखें एंड इफ वी कैलकुलेट इट इज़ अराउंड वी वुड से अराउंड 13,000 पीपल स्टिल इन पूल और on average we have seen around 15,000 people can come in pool for the next draw if it happens according to the Canadian government which happens the draw every 2 weeks. अगर वो होता है तो तकरीबन हमारे ड्रॉ में बहुत ज़्यादा लोग होंगे. तो जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसके लिए कि क्या प्रिडिक्शन हो सकती है, वी फोरकास्ट कि पहले क्वार्टर में 2021 में हमारा स्कोर 468 से ऑल प्रोग्राम्स के लिए स्पेसिफिकली जो लास्ट 23rd दिसंबर को आया था वो इंक्रीज होगा और उसकी रेंज होगी 469 टू 472 में. येस, द कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. द रीजन बीइंग अभी इस ड्रॉ में PNP प्रोग्राम के लोग कवर हुए थे तो ओवरऑल द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द पूल इज गोइंग टू इंक्रीज. So the people who have more CRS score, they are going to be more those kind of people. So they will increase the cutoff a little bit so that they can send invitations to apply according to
the numbers they are looking at. अब लुकिंग इन टू द फ्यूचर, ये हमने लास्ट ईयर भी बात की थी. अब 2021 में क्या होने वाला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट के इमिग्रेशन प्लान्स सबके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर वेरी इनकरेजिंग. फर्स्ट रीज़न बीइंग कि उनका ओवरऑल टारगेट अब पिछले साल का 2020 का पूरा नहीं हुआ है. एंड देयर हैव बीन सम अदर क्राइटेरियाज दैट व्हाई इमिग्रेशन इन 2021 इज गोइंग टू इंक्रीज. We are going to make a very full-fledged interactive video for you which is coming up next. So please do watch that video and subscribe our channel. और साथ ही में different programs in the starting of 2021 जनवरी से शुरू हो चुके हैं. One of them is Newfoundland and Labrador और भी programs आ रहे हैं अपने pilot programs के साथ. तो बहुत ही सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री और बहुत तरीके के टेम्पररी वर्कर प्रोग्राम्स द कैनेडियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग. सो देयर आर मेनी थिंग्स कमिंग अप. सो द फ्यूचर लुक्स इनकरेजिंग फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन. सो बी हैप्पी एंड थैंक यू. ओके गाइस, आपको ये छोटा सा बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल. So guys, hope we were able to provided you as much as information. साथ ही में if you have any questions regarding this video, please guys comment section there. Please comment there and we will be able to provide you all the information and try to answer your queries. Guys, we have noticed it that people are watching our videos but they are missing subscribing it. So to support us, please subscribe our channel, like and share our videos. Also press the bell icon so that you will get the latest update. To keep us motivated and to answer all your queries, please follow our Instagram and Facebook page by the name Canada Wale Sharma. So till the next video, Keep smiling and stay tuned. Thank you.